You know about NI Act. It's the purpose of a negotiable instrument is the law of commercial world, which was enacted to facilitate the activities in trade and commerce, making provisions of giving sanctity to the instruments of credit which would be deemed to be convertible into money and easily passable from one person to another person. Okay, this is what your NI Act means. NI Act, negotiable instrument, is a thing which is used as a very sacred instrument in the credit world or in the world of trade and commerce. ट्रेड एंड कॉमर्स में जब मैं किसी को कोई सामान बेच रहा हूं, सामने वाले का हो सकता है कि मेरे ऊपर भरोसा ना हो, मगर मेरे लिखी हुई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भरोसा हो सकता है। जब मैं किसी को चेक देता हूं, मैं यानी कि क्रेडिट में रहता हूं, मैं उसको इमीडिएट पैसा नहीं देता हूं, मैं उसको बोलता हूं कि चेक 10 दिन के बाद जाके इनकैश कर देना क्योंकि मेरे पास अभी पैसा नहीं है। तो किसी को मैंने चेक दिया, इसका ये मतलब है कि मैं इसको ऑनर करूंगा, नहीं तो मैं जेल जाऊंगा। ठीक है, तो एनआई एक्ट इसीलिए बना है कि किसी के पास अगर कोई पैसा ना हो, इमीडिएटली पैसा ना हो, वो प्रॉमिस कर दे कि मैं पैसा देने वाला हूं उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो उसको भी पैसे की बराबर माना जाएगा। क्योंकि खोखले वादे बहुत लोग करते हैं मगर निभाते नहीं है। ठीक है, तो हम लोग तो भगवान को भी धोखा दे देते हैं, फिर हम इंसान को क्या छोड़ेंगे, है ना, वो गाना है। तो वी आर सच ए क्रीचर हु मतलब टेंड टू बिट्रे द गॉड। सो वी डोंट लिव इंडिविजुअल्स। हम अपने सगे लोगों को भी धोखा दे देते हैं, हम अपनों को ही धोखा दे देते हैं। इंडियन हिस्ट्री इज फुल ऑफ द बिट्रायल्स ऑफ आवर ओन सोल्जर्स, ओन सेनापतिस, राइट। तो वी डोंट ट्रस्ट ईच अदर, राइट। इंसान की शब्दों का कोई वैल्यू नहीं है। as long as he don't give a check, he don't give a promissory note, as long as he don't give you he doesn't give you a, what you say, a bill of exchange, right? So NI Act is enacted. Your commitment should reflect in a piece of paper with your signature. If you divert from your promise, you will be sued. ठीक है, अगर ऐसा होता प्यार मोहब्बत में कोई बेवफा नहीं होता, राइट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्यार मोहब्बत में तो चलता नहीं है, बिजनेस में चलता है। इट वर्क्स ओनली इन बिजनेस केस। सो वी हैव थ्री ऑफ देम: promissory note, bill of exchange and check. And the feature of negotiable instrument is it is written and signed. ठीक है, खाली वादे का कोई कीमत नहीं है। That should be written and it should be properly signed. It is drawn for a consideration. किसी काम के बदले में हुआ होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं चेक आपके नाम लिखूंगा नहीं, कोई कारण तो रहा होगा जिसके लिए मैं आपके नाम पे चेक लिख रहा हूं। कोई बिजनेस, कोई ट्रेड, कोई कॉमर्स, कोई ट्रांजैक्शन ड्यू होगा, इसीलिए चेक बन रहा है। You can crack SBI CBO with only two things. One is the right content and the another is the right intent. I have the right content for you, but do you have the right intent to crack this exam? I know that most of you are struggling with your worst work culture and not having enough time to prepare. But simply giving 2 hours a day can give you selection. We have a wholesome course here for you. So don't waste your time here and there. Join the best in the industry and start preparing now. Even in the last 50 to 60 days, there is enough time to cover the syllabus. And we have given you additional test series and we are coming up with the Ready Reckoner to aid your preparation. So don't waste your time. Now watch this sample session, then you will understand why the courseware of Knowledgist is so important for you to get selected. So see you at the other side. Thank you. And it is transferred by delivery. If I give it to somebody, it is deemed as transferred. If I send it through courier to someone, take it and give me the instrument, give me the goods on behalf of it, then it will be considered as transferred from one party to another. I can also endorse. And bona fide transferee means there should be a reason to transfer. आप मेरे कनपट्टी पर बंदूक रख के मेरे से चेक साइन करवा नहीं सकते, नहीं तो जो चोर आते हैं आपके घर में आपसे चेक साइन करवा लेते, आपके सोना जेवरात के पीछे नहीं पड़ते। ठीक है, अदरवाइज दिस thief should have come and taken a signature from you. If a thief would have came to house, मतलब एक चोर अगर आपके घर में कभी आया है और आपसे चेक साइन करवा के लेकर जाके पैसा इनकैश करवा भी लेता है, तो आप उसको सू कर सकते हैं, बिकॉज देयर वाज नो इंटेंशन टू पे हिम. गॉट इट? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक. एंड हु आर द पार्टीज इन ए promissory note?
finally maker, payee, holder, endorser, endorsee means when it is transferred, right? In a bill of exchange, drawer, drawee, payee. These are the main three people. Then acceptor, holder, endorser, endorsee, drawee in case of need. Right? These are additional features when you endorse check in someone's name. Then parties to a check, maker, drawee, and in a case of check, bank is always the drawee because it gives the money to the pay, right? Pay is the person to whom you consider to pay. आप पेई वो है जिसको आप पैसा देना चाहते हैं, और ड्रॉई हमेशा बैंक बनेगा। मेकर या फिर ड्रॉयर कौन है? जो सिग्नेचर करता है चेक में, जिसका चेक बुक है, ठीक है। होल्डर, एंडोर्सर, एंडोर्सी आर द एडिशनल पार्टीज, राइट। इन सेक्शन 6 चेक इज डिफाइंड। सेक्शन 6 में चेक डिफाइन होता है। जब आप एक प्रोफेशनल बैंकिंग के इंटरव्यू में जाते हैं और आपको पूछा जाता है कि चेक क्या है, आपको हमेशा ये ही लाइन बोलना है। You should by heart this line. Whenever you go for an interview, you should not say check is a piece of paper. There is mentioned the name of the drawer is mentioned where the drawer makes a signature. The name of the drawee bank is there. There are two parallel lines. These are bullshit, bakwas. You should not say all that. If you are a banker, you should say what is a check. Means that check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand, and it includes the electronic image of a truncated check and a check in the electronic form. यही है चेक का डेफिनेशन, इसको बाई हार्ट कर दीजिए। क्या है चेक? बिल ऑफ एक्सचेंज का एक फॉर्मेट है। ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर, मतलब एक बैंक वाला ही उसको एनकैश कर सकता है। यानी कि आप किसी एनबीएफसी के नाम पे, किसी थर्ड पार्टी के नाम पे, किसी कॉर्पोरेट के नाम पे चेक इशू नहीं कर सकते। मतलब उनको पे ही कर सकते हैं बट ड्रॉ ही नहीं बना सकते, क्योंकि पैसा हमेशा बैंक से ड्रॉ होगा चेक के केस में। एंड नॉट एक्सप्रेस्ड, ये आशा नहीं करता है चेक लिखने वाला कि इसको डिमांड के अलावा कभी दिया जाए। मतलब आपके पास चेक है, मैंने एज ए बैंकर मैंने देखा उसको और आपको उसके बदले में पैसा दे दिया, ऐसा नहीं होगा। आई सॉ एंड आई गेव यू द मनी एज ए बैंकर, आई शुड नॉट डू दैट। यू हैव टू डिमांड मनी एंड देन ओनली the money will be paid. Okay, it is payable otherwise than on demand, and it is not payable otherwise on not expressed to be payable otherwise than on demand. मतलब बिना डिमांड के पेमेंट नहीं होगा। एंड नाउ as you know we are in the electronic age, so the electronic form of the check is also a check. That is section 6. you have to by heart it. ठीक है, इसको क्लास के खत्म होने के बाद इसको याद में डाल दीजिए। 10 मिनट में एमसीक्यू सेशन होगा। आप बोलेंगे कि सर मैराथन है, आप क्यों प्रीटेक्स्ट में बात कर रहे हैं? व्हाई यू आर स्पीकिंग एडिशनल थिंग्स? बिकॉज दीज आर द थिंग्स व्हिच विल क्लियर योर फंडा। इवन इफ द सेड एमसीक्यूज आर नॉट आस्क्ड, you will be in a position to answer them. I want you to improvise your level of knowledge. आप अपना नॉलेज का लेवल बढ़ाइए, ठीक है। ड्रॉयर, who are the parties in the check? First 3 parties. ड्रॉयर, the person who draws his signature on a check book, ठीक है। सिग्नेचर भी अपने आप में एक आर्ट है कि जिसका सिग्नेचर जितना अच्छा है वो उतना ही बड़ा आदमी है। हम सोचते हैं सिग्नेचर देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आदमी का लेवल ऑफ नॉलेज क्या होगा, राइट। तो इसीलिए सिग्नेचर एक आर्ट है। तो जो ड्रॉ करता है जो ड्रॉ करता है, ठीक है, ही इज द ड्रॉयर। ड्रॉई जिस बैंक का होगा चेक बुक, दैट बैंक इज ड्रॉई एंड पे टू whom you want to make the payment, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट टाइप बियरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बियरर इंस्ट्रूमेंट में खाली a negotiable instrument is payable to bearer when it expressed to be so payable. A person who is the lawful holder of a bearer instruments can obtain payment on the instrument, but the order instrument which is expressed to payable on order and when expressed to be payable to a particular person, it doesn't contain any words प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर। मींस एक बियरर चेक में किसी को पेमेंट करने के लिए डायरेक्शन नहीं होगा। जिसके पास भी चेक बुक होगा, जिसके पास भी वो चेक का लीफ होगा, whoever carries the check, right, with bona fide interest, चोर नहीं, चोरी की बात नहीं है। मगर मैं खाली चेक लिखूंगा, आप अपना नाम लिखिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं, आप अपने भाई का नाम लिख के उसको इनकैश करने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। बट इन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट
I order to pay Mr. Harish this sum of amount. मतलब हरीश ही वो पैसा ले सकता है, गोपाल नहीं ले सकता, श्याम नहीं ले सकता, राम नहीं ले सकता, आप नहीं ले सकते, हम नहीं ले सकते. Who will take it? Only Harish will take it. So that is an order instrument. It carries my order to pay to a certain person, to a particular person. This is my order. To whom I will order? In case of checkbook, whom I will order? I will order my bank. My bank is my agent. I am the principal. I will order my bank, my dear bank, pay Mr. Harish 1 crore rupees. Right? That is the order. Bearer is whoever carries the check. Whoever carries the check. मुझे पता नहीं है कि सीबीओ एग्जाम कौन टॉप करेगा. एंड आई वांट टू गिव यू 7 crore rupees जैसे केबीसी में दिया जाता है. सो फ्रॉम नाउ ऑन आई विल जस्ट मेंशन 7 crore rupees and I will not mention the name. Whoever tops the CBO exam will take it to the bank and that bearer will get the check, will get the money. So do you want to be the bearer of my CBO batch or UBI batch, whoever, whatever batch? So if you want to be bearer, don't catch my 7 crore sum. Try to catch the knowledge I wish to impart to all of you, because that will be more than 7 crores. Believe me, आपका 7 करोड़ से ज्यादा एनपीएस बन जाएगा भाई. 10 करोड़ से ज्यादा आपका एनपीएस का अमाउंट होगा. तो if you want to take that, do long for that amount, not for my 7 crore gimmicks. ठीक है. Next we will go to the MCQs. ये क्वेश्चन लास्ट सीबीओ 2024 में पूछा गया था, मतलब लास्ट सीबीओ एग्जाम में. इन केस ऑफ रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक, द बैंक इज लायबल टू whom? यस, टू द अकाउंट होल्डर. वेरी गुड. लास्ट सीबीओ एग्जाम, लास्ट सीबीओ, आपको इसी लेवल पे क्वेश्चन आएगा, इसी लेवल पे ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एंट्री लेवल एग्जाम है तो इसी लेवल पे आएगा. तो हम क्लास को इसी लेवल पे रखेंगे. ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डेटेड 30th August 2021 is made payable 3 months after date. What will be the maturity date? The instrument is at maturity on 3rd day after 30th November. 30 plus 3 days. ठीक है? Not 30, it's actually 90 days. 3 months after due date. 3 months after date, what will be the maturity date? 3rd December 2021. ठीक है. 3rd December, 3 days is the grace period given. Right? Dishonor of negotiable instrument by non-payment is covered under section what in Negotiable Instrument Act? Dishonor of negotiable instrument by non-payment, मतलब आपके अकाउंट में पैसा था ही नहीं. That is the dishonor. The dishonor is reason is insufficient funds. It is section 92. Dishonor by non-payment. A promissory note, bill of exchange or check is said to be dishonored by non-payment when the maker of the note, acceptor of the bill or drawee of the check makes default in payment upon being duly required to pay the same.